This is your second lesson, The Friendly Mongoose, from your book, A Pact with the Sun. This is the story about a farmer, his wife, and their small child who lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. Let's see what happens with the child or mongoose. Dear students, you will listen to my reading and notice how I am speaking some particular words, and you will listen to the pronunciation of the words and then repeat after I finish. You will yourself read this lesson so that your reading becomes good. Let me start reading. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. "We must have a pet," the farmer said to his wife one day. "When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion." His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. "It's a baby mongoose," said his wife, "but will soon be fully grown. He will be a friend to our son." Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, "I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose." "You needn't be afraid," said the farmer. "The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know." His wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with rage, and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. "Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done?" she cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. This is a story from the Panch Tantra. Here the story ends up. Dear students, let's have a look on some difficult words or phrases. Mongoose is a kind of small animal जिसे नेवला कहते हैं. Mongoose एक नेवला होता है. Next word is companion. You will pronounce it companion. Fully grown. Fully grown means पूरी तरह से विकसित हो जाएगा. Will soon. Soon means शीघ्र, जल्दी ही. Bushy tail. Tail means पूंछ. Bushy जिसपे वैसे तो बुश का मतलब क्या होता है? बुश मीन्स झाड़ियाँ, तो बुशी मीन्स झाड़ियों जैसा. तो यहाँ पे टेल पे बाल होते हैं इसलिए बुशी कहा गया. अधिक घने बालों को बुशी कहा जा सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरनेटली. बदल बदल कर. क्राइंग. अल्टरनेटली मीन्स रुक रुक कर. क्राइंग मीन्स रोते हुए.
क्रैडल पालना जिसमें बच्चे को झुलाते हैं। फ्रैंकली का मतलब है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, कि मैं बच्चे को मंगूज के साथ अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहती। यू नीडंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मैंने डरा हुआ। तो नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड मीन्स आवश्यकता होना। वैसे तो इसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। और जैसे कहते हैं यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू नीड नॉट टू वरी गलत हो जाता है। टू जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड को यूज़ करोगे तो टू का इस्तेमाल नहीं करते, हम टू का यूज़ नहीं करते। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड नहीं होगा, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोसरीज जो करियाने की स्टोर होता है, करियाने की दुकान होती है, उसमें खाने पीने का सामान होता है, आटा दाल वगैरह ग्रोसरी होती है सारी। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, जैसा कि उसकी आदत थी यहाँ पे मंगूज की, कि वो दौड़ा दौड़ा फार्मर को या उसकी पत्नी को देखने आता था कि वो आ चुके हैं, तो कमरे से बाहर निकल के देखता था। कस्टमरी, कोई भी रिवाज उसको कस्टम से बना है, कस्टमरी जो रिवाज बन जाए। स्क्रीम मीन्स टू क्राई लाउडली, चीखी। स्मीयर्ड विद मीन्स सना हुआ होना, जैसे वेट विद ब्लड, स्मीयर्ड विद ब्लड, मंगूज के ऊपर खून लगा हुआ था, रक्त लगा हुआ था। पॉज पंजे होते हैं। स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, स्क्रीम मीन्स चीखना, वो चीखी। हिस्टेरिकली पागलों की भांति, जैसे एक फिट पड़ जाती है। हिस्टीरिया इज ए फिट, एक प्रकार का फिट होता है, एक पागलपन होता है। हिस्टेरिकली पागलों की भांति वो चिल्लाए। ब्लाइंड विद रेज, गुस्से में अंधा हो जाना, क्योंकि गुस्सा जब होता है तो उसमें तर्कशीलता, जो हमारा विवेक होता है, हमारे रीजनिंग होती है, वो काम नहीं करती, इसलिए ब्लाइंड विद रेज कहा है। सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी में काम करना, और जल्दबाजी में काम जो होते हैं वो गलत होते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप जानते हैं कहावत है कि जल्दबाजी में जितने भी काम होते हैं गलत हो जाते हैं। सॉब करना होता है सुबक सुबक के रोना, सॉबिंग, सुबकियाँ लेके रोना। अनअवेयर, ना जानते हुए। अनअवेयर, अवेयर से बना, अपोजिट है अवेयर का। अवेयर जागरूक, अनअवेयर जागरूक ना होना। वाइप करना होता है पोंछना। एक वर्ड इसमें और आया है ले डेड, लाई से बना। लाई का मतलब लेटना भी होता है, लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है। अगर झूठ बोलना है तो उसकी फॉर्म्स होती है लाई, लाइट, लाइट, और ले, लाई, ले, लेन। लाई फर्स्ट फॉर्म है, ले लेटना, लेटा, मतलब वो मरा हुआ, लेटा हुआ पड़ा था। ले मीन्स लेटा हुआ, डेड मीन्स मरा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और उनकी प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग था वो मैंने बता दिया है। अब आप लेसन की हिंदी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपके लिए।